वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। हम बात कर रहे थे कंटिन्यूस मैपिंग्स के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पढ़े इन फॉर्म ऑफ लेमास एंड प्रोपोजिशंस। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन कंटिन्यूस मैपिंग। ओके, इस लेक्चर में हम कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूफ करेंगे विच आर वेरी पावरफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूस मैपिंग, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हम उसको यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, सो अ मैपिंग f defined from x to y is continuous on x if and only if f inverse z is open। नाउ अगर f x से y में है तो f इनवर्स इमेज x में बनेगी, इज ओपन in X for all open subsets Z of Y. Okay, so what this theorem is trying to say, suppose we have this is our Y and this is our X. We have the function f from this X to Y, and suppose we have a set, suppose this is our open set Z. ठीक है, if we identify the f inverse image and suppose this is our f inverse Z, if for every open set Z its inverse image is open, then this function f is continuous। और अगर f कंटिन्यूस है तब हर एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज इस x में ओपन ही मिलेगी। ओके, सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। इन द फर्स्ट डायरेक्शन वी विल ट्राई टू शो व्हेन वी हैव द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f, then the inverse image of every open set in y is open in x। Okay, we will choose a subset z from y, and then we'll take the inverse image of this g, that will be subset of x. So for z being open in y, its inverse image, that is f inverse z, will be open in x in case when f is open, f is continuous। Okay, अब हमें particularly ये जो inverse image है, this is दी सेट सबसेट इन एक्स, और किसी भी सबसेट जो कि एक मैट्रिक स्पेस है ना, तो किसी भी मैट्रिक स्पेस के किसी सबसेट को ओपन कैसे प्रूव करते हैं, वी नो वेरी वेल दैट। ओके, we will identify a point in this set and we'll try to show that that point is an interior point of this set। okay, अब interior point का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज हमने यहाँ पर कोई अगर पॉइंट कंसिडर किया तो इस पॉइंट पर हम एक बॉल बना सकते हैं, that ball completely lie in this set। if this is true for every point, देन वी विल से कि इस सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, और जब कभी भी किसी भी सेट के लिए हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो उसे ही हम ओपन सेट बोलते हैं। ठीक है, बट there is a easy path in the discussion of subset of x। okay, we have to the very well obvious subsets of x, one is phi and one is x। अगर y में कोई ऐसा सबसेट मिल जाए जिसकी इनवर्स इमेज फाई है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तब भी ये ओपन हो जाएगा। और अगर इस y के इस g सबसेट के लिए इसकी इनवर्स इमेज पूरा का पूरा x बन रहा है, तो उस केस में भी f इनवर्स z एक ओपन सेट बन जाएगा। ओके, सो अगर ये फाई है या फिर पूरा का पूरा x है, तो उस केस में this set, this inverse image will be open obviously। So in that case we will try to show for the case in which the f inverse z is not empty and this f inverse is not whole this set x। इसका मतलब ये इसका एक कोई proper non empty set। okay, so let me write the proof। I have already told you the outlines of this proof। So first of all, we are going to prove that if f is continuous, then this will prove that f inverse z is open
in X for all open subsets Z of Y. Okay, so first we will consider that F is continuous. Okay, so suppose F is continuous, जैसे हमने कहा एफ कंटिन्यूस है, इसका मतलब जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है दैट कैन बी अप्लाइड ऑन दिस एफ. ओके, कंटिन्यूस ऑन एक्स एंड लेट z be an open set, open subset of y. Okay, we have the open set subset that is the purely arbitrary. Okay, तो अब हम इसकी इन्वर्स इमेज आइडेंटिफाई करेंगे और हम बताएंगे कि इस जी की एफ इन्वर्स इमेज ओपन सेट ही है. ठीक है, सो वी कैन नो दैट वी नो दैट phi and x are open in X. So if f inverse z is equals to phi or f inverse z is equals to x, then f inverse z is open in X. Okay, so let us suppose that f inverse z is a proper non-empty subset of X. Okay, so in that case, क्योंकि नॉन एम्प्टी है और प्रॉपर है, तो इस केस में वी कैन सपोज समथिंग. सो नाउ सपोज दैट सम x let x belongs to f इनवर्स z. अब हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया है. अब हम इस x को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करने वाले हैं. इंटीरियर कैसे प्रूफ होगा कि इस x पर बनाई हुई हमें एक ऐसी बॉल मिल जाए दैट कंप्लीटली लाई इन दिस सेट. ओके, सो अब देखिए हमने लिखा x बिलोंग्स टू f इनवर्स z, देन व्हाट वी कैन कंक्लूड, अगर x f इनवर्स z में है तो इस x की f इमेज z में रही होगी. सो देन द f इमेज ऑफ x दैट विल बी इन g. ओके, अब z का कोई हमें एक मेंबर मिल गया और g के बारे में हमें पता है कि दिस इज एन ओपन सेट. अब अगर ये ओपन है तो इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है. इंटीरियर पॉइंट है तो हम हमेशा एक बॉल बना सकते हैं दैट कंप्लीटली लाई इन दिस z. ओके, सिंस z is open, so there exists epsilon positive such that the ball, open ball, is centered at f of x with radius epsilon that contained in this z. Okay, now we have a ball into our discussion. So we can say हमने continuity की just previous lecture में एक definition पढ़ी थी that f is continuous if and only if for every epsilon positive there exists delta positive continuous at a. Okay, at a. Okay, there exists delta positive such that the ball centered at a with radius delta contained in f image, f inverse image of the ball is centered at fa and with radius epsilon. Okay, हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था एंड दैट वाज if and only if result. Okay, so we can say for every epsilon we may have some delta. Now we have a epsilon. क्या इस epsilon के लिए भी हम ऐसा delta आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? The answer is yes. For this epsilon we can identify such delta. Okay, so then from
the continuity of f there exists, or let me write, there must exist delta positive such that this open bowl at x with radius delta. Now this is the f image of x, so this will contain in f inverse image of s, open ball s centered at f image of this, so that is f of x, and then epsilon. Okay, so we have this open ball. Now you can see, if I say the f inverse image of this contained in this, अगर हम इस सेट को, दैट दिस बॉल को, अगर हम एक लार्जर सेट से रिप्लेस करेंगे तो वी कैन से दिस विल कंटेंट इन एफ इनवर्स. अब हम इस बॉल की जगह वी आर राइटिंग अ लार्जर सेट. ओके, so we can say this result will be in inclusion. Okay, or that is, you can say एस एक्स डेल्टा कंटेंड इन एफ इनवर्स जी. और जैसे ही हमने ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, सिंस x is arbitrary in, sorry, this is f inverse z. Okay, arbitrary in f inverse z, therefore you can say every element of f inverse z is interior point of f inverse z, and this will implies that अगर किसी सेट का हर पॉइंट ही इंटीरियर पॉइंट है, देन f इनवर्स z इज एन ओपन सबसेट ऑफ x. और ये हमने ट्रू किया है फॉर एनी g विच इज द open subset of y. Okay, so this is how we can prove the one direction. Now come to the another direction in which we are proving that for every open subset z of y, if f inverse z is open in x, then f is continuous on x. ठीक है, सो सिमिलरली हम कोई भी ओपन सेट के लिए उसकी इन्वर्स इमेज ओपन ही है x में, तब हम f को कंटिन्यूस प्रूफ करने वाले हैं. मैंने जस्ट आपको एक रिजल्ट बताया ये वाला कि f कंटिन्यूस है इफ एंड ओनली इफ वी हैव दिस सिचुएशन. ओके, वी हैव द इन्वर्स इमेजेस, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन बॉल है, इसकी इन्वर्स इमेज भी एक ओपन बॉल ही होगी. ठीक है, हमने बस ये शो करना है अगर हमने कॉन्टिन्यूटी बतानी है, तो हम कॉन्टिन्यूटी को यहाँ पर ओपन बॉल्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं. नाउ वाई वी आर यूजिंग दी ओपन बॉल्स, क्योंकि हमने कहा है कि किसी भी ओपन सेट की इन्वर्स इमेज ओपन ही होगी, और हमने ये प्रूव किया है कि हर एक ओपन बॉल एक ओपन सेट ही होती है. ठीक है, सो लेट मी राइट दिस डायरेक्शन फॉर ऑफ द प्रूफ. सो सपोज conversely that f inverse z is open in x for all open subsets z of y. Okay, now suppose let x belongs to x, we are choosing any arbitrary point and we will try to show कि इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, अब इसके लिए कब होगा, जब हम इसमें बनी हुई कोई बॉल को इसकी f इमेज पर बनी हुई बॉल में कंटेंट करा दे. ठीक है, देन फॉर ईच
epsilon positive, the set is f of x comma epsilon is open in y, right? अगर ये ओपन बॉल है और ये y में ओपन है तो इसकी f इनवर्स इमेज ओपन होगी x में, देन फ्रॉम दिस सपोजिशन f inverse s of fx comma epsilon is open in x. ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर f inverse of this image is open in this, then what we can say, since you can see we are telling that the f inverse image of this set. Okay, अब ये कहाँ से आया है? This is the open ball whose center is f of x. Now f of x is the f image of x, so you can say since the x contained in f inverse of s of fx comma epsilon, right? So it follows that there exists delta positives such that the pole s x comma del that delta contained in f inverse s of fx comma epsilon. Okay, so this is how you can prove that we have an open ball that contain the f inverse of this open ball. Okay, this will show the continuity of f at x. Now मुझे लगता है यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गए, लेट मी रिपीट दिस. हमारे पास ये कंक्लूजन था दैट f इनवर्स of this ball this ball which whose center is fx comma epsilon. Now you can see हमने f inverse इमेज की बात करें. ओके, दिस इज आर y and this is our x. ठीक है, and suppose somewhere we have this ball is fx epsilon. ठीक है, अब हमने कहा ये fx पे बनी हुई है तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा. ओके, ये है हमारा fx. अब अगर ये fx है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास x भी रहा होगा जिसकी f इमेज हमें ये मिला होगा. ठीक है, अब जब हम ये कह रहे हैं कि f इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट इज ओपन इन x, इसका मतलब हम जब इसकी इनवर्स इमेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी सेट बनेगा दैट विल कंटेन दिस x एट लिस्ट. हाउ? क्योंकि तभी तो हम इस सेट में जब f अप्लाई करेंगे तो x हमारा fx पे जाना है. ओके, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि इसकी f इनवर्स इमेज इस सेट पर नहीं आ रही है जो कि इस x को कंटेंट कर रहा है, मान लेते हैं इसकी f इमेज यहाँ पे आ रही है, f इनवर्स इमेज यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर x नहीं है, तो इसका सेंस ये हुआ कि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी f इमेज यहाँ पर आएगी, तो इसके लिए तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, और जब प्री इमेज नहीं है इसका मतलब ये इस सेट में रहेगा ही नहीं, है ना? वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो इसका मतलब अगर हम fx पे कोई बॉल बना रहे हैं तो इस बॉल की f इनवर्स इमेज विल डेफिनेटली कंटेन x ऑलवेज. ओके, सो दिस इज द मेन आइडिया फॉर दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रूफ. नाउ वी आर सेइंग कि जब कभी भी हम कोई भी पॉइंट लेते हैं x से, इस वाली बॉल से, दैट इज x एप्सिलॉन, हम कह रहे हैं कि ये एक इनवर्स इमेज है ऑफ ओपन सेट, और ओपन सेट पर्टिकुलरली ओपन बॉल है, और ओपन बॉल पर्टिकुलरली ओपन सेट ही होते. इसका कोई एक पॉइंट है x. अब ये x क्योंकि ओपन सेट का एलिमेंट है इसलिए हमेशा एक ऐसी ओपन बॉल मिलेगी ही मिलेगी जो कंप्लीटली इसमें लाई करेगा. ये हम क्यों लिख पा रहे हैं? सिंस f inverse of s of fx epsilon is open. Okay, or let me write as this is open in x. ठीक है, so you can say, so for epsilon positive there exists delta positive
such that the ball Sx delta contained in the inverse image of ball centered at f image of x and epsilon, okay, which shows that f is continuous at x, and since x was arbitrary, since x is arbitrary in x, therefore f is continuous on x, okay, that is at every point of x, ठीक है.